Hey guys, welcome back to my channel. Today I am going to show you how to make condensed milk at home in this video. All you need is 1 liter of milk, 200 grams of sugar and 2 pinches of baking soda. Take a pan and add milk in it. I have taken full cream milk. It's your choice to take full cream milk or toned milk. Now add sugar in it and cook it in the medium flame. इसे रेगुलरली चलाते रहिए जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। As you can see, अब ये गाढ़ा हो चुका है. Now turn off the flame and add baking soda in it. और अब इसे जोर जोर से मिलाते रहिए. बेकिंग सोडा डालने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा और ये वाइट कलर का हो जाएगा. बट डोंट वरी, ठंडा होने के बाद ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा. As you can see the consistency of the condensed milk, ये बहुत गाढ़ा हो चुका है और ठंडा होने के बाद तो बिल्कुल मार्केट के condensed milk जैसा हो जाएगा. Thank you guys for watching my video. Please like my video and subscribe my channel and press the bell icon for the notifications.